अंके जी को प्रणाम। नमस्कार नमस्कार दस साहब, गुड इवनिंग। अच्छा, आप ठीक हो गए? या आई एम फाइन। आज मैं यहाँ आया हूँ ना, आई एम विद माय पेरेंट्स टुडे, सो आई एम मोर और लेस फाइन। सायंकालीन सत्र में उपस्थित आप सभी लोगों का स्वागत है। टिक पठान पर आज हमारा 7वां और इस सीरीज का अंतिम सत्र होगा। उसके लिए मैं प्रारंभिक वंदना अर्पणा तथा उसके उपरांत जो सूत्रों का पाठ है डॉक्टर सोनल को इनवाइट करना चाहूंगा। ओवर टू यू सोनल जी। थैंक यू निखिल जी। आप स्क्रीन शेयर करें। अर्पणा एवं प्रारंभिक योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घम् इमे हि सत्कारे हि यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयामः। साधुनो भन्ते भगवा शुचिरपरिनिर्वृतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सत्कारे दुर्गतपणाकारभूते पटिगणहातु अम्हाकङ्गीकरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। हन्दमयं बुद्धस्य भगवतो पूर्वभागनमकारं करोमसे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्ध धम्म संगम उनका पाठ करें। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाक्षातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको देहिपस्सिको औपनयिको
पश्चात्तं वेदितव्यो विनियोगीति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुद्गला हे स भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्याति। अभी जो तिक्पठान के जो 24 कड़ियां हैं उनका पाठ करेंगे। पच्चय उद्देश्यो हेतुपच्चयो आरम्भणपच्चयो अधिपतिपच्चयो अनन्तरपच्चयो समनन्तरपच्चयो सहजातपच्चयो अन्यमन्यपच्चयो निश्चयपच्चयो उपनिश्चयपच्चयो पुरे जातपच्चयो पश्चाजातपच्चयो आसेवनपच्चयो कम्मपच्चयो विपाकपच्चयो आहारपच्चयो इन्द्रियपच्चयो ज्ञानपच्चयो मग्गपच्चयो संपयुक्तपच्चयो विपयुक्तपच्चयो अधिपच्चयो नधिपच्चयो विगतपच्चयो अविगतपच्चयोति। प्रत्यय का पाठ हेतु प्रत्यय आलंबन प्रत्यय अधिपति प्रत्यय कोई अंतराल नहीं प्रत्यय बिल्कुल भी अंतराल नहीं प्रत्यय साथ उत्पन्न हुए प्रत्यय अन्योन्य प्रत्यय आश्रय प्रत्यय निर्णायक आश्रय प्रत्यय पूर्व उत्पन्न प्रत्यय पश्चात उत्पन्न प्रत्यय दोहराना प्रत्यय कर्म प्रत्यय कर्म फल प्रत्यय आहार प्रत्यय इंद्रिय प्रत्यय ध्यान प्रत्यय मार्ग प्रत्यय संयुक्त प्रत्यय वियुक्त प्रत्यय विद्यमान प्रत्यय अविद्यमान प्रत्यय लुप्त प्रत्यय प्रकट प्रत्यय। Thank you. Over to you. Thank you. Now I would request sir to take over the session. Over to you, sir. सर आप पर हैं। हम लोग पठान की 18 कड़ियां समझ चुके हैं, बाकी 6 बची हैं। वो काफी 4 तो कही जाती हैं एकेडमिक इंटरेस्ट की हैं, बट फिर भी उनमें काफी कॉमनैलिटी है कुछ चीजों में। बेसिकली
दो तो कम हो ही जाते हैं क्योंकि कोई एक दूसरे से एक जैसे हैं। पहले ये करें संयुक्त प्रत्यय, संयुक्त प्रत्यय क्या है। तो इसकी जो स्टेटमेंट दी गई है उससे शायद आपको ख्याल हो जाएगा कि किससे मैच करती है, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। चत्तारो खंडारूपिनो अन्यमन्य संपयुक्त पच्चय न पच्चय। अगर आप इस संपयुक्त की जगह कोई और डालना चाहे तो क्या डालेंगे इसमें इंटरव्यू, ये कई बार आ चुका है ये स्टेटमेंट। चत्तारो खंडारूपिनो अन्यमन्य एक्स वाई जेड, चार अरूप खंड इससे कुछ से भी है और सब एक दूसरे के साथ उत्पन्न होते हैं। अन्य सब साथ उत्पन्न होने का क्या हुआ, अन्य अन्य कुछ सहजात बच्चे। अन्य मन्य एक दूसरे को रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, जैसे दो छड़ जैसे रखी हुई हो डंडियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, इस तरह से चारों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये देखेंगे कि सहजात अन्यमन्य और विपाक, मिश्रित में विपाक से एग्जैक्टली मैच करता है सब। तो आप पूछेंगे फिर संयुक्त और सहजात में क्या हुआ। सहजात का मतलब साथ उत्पन्न हो रहा है, संयुक्त का मतलब साथ है, तो उनमें फर्क क्या है, बहुत सटल सा डिफरेंस है। सहजात का मतलब साथ उत्पन्न हो रहे हैं, संयुक्त का मतलब कि वो हमेशा साथ रहते हैं। तो इसका मतलब उत्पन्न भी साथ होते हैं और समाप्त भी साथ होते हैं, और उनका जो आलंबन है जिसके आधार पर बनते हैं वो सेम है। तो दिस इज द, मैंने जब नोट ऐड किया है इसमें हमारी बुकलेट में, वी कैन रीड दैट अगेन। जो साथ उत्पन्न हो एवं समाप्त होते हैं, संयुक्त के बारे में लिखा है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक ही आयतन पर आधारित होते हैं, तो ये संयुक्त है। सहजात वो हैं जो साथ उत्पन्न होते हैं, जरूरी नहीं है कि समय एक ही साथ समाप्त हो। जैसे उदाहरण दिया गया, चित्त जनित रूप अरूप धम्मों के साथ उत्पन्न होते हैं पर साथ समाप्त नहीं होते, क्योंकि रूप का टाइम ड्यूरेशन, जो रिसाइकलिंग ड्यूरेशन है, वो 17 माइंड मोमेंट्स के बराबर है। उस सेंस में ये डिफरेंस माना जाता है। तो काफी चीजें जो सहजात है वो संयुक्त भी है। जो देखेंगे जो अरूप खंड है वो सहजात भी है तो संयुक्त भी है, लेकिन जहाँ रूप आएगा वहां पे वो संयुक्त नहीं हो पाएगा, वियुक्त होगा। वियुक्त का मतलब संयुक्त तो साथ चढ़ रहे हैं, वियुक्त का मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक ही अलग अलग है, वो अलग तरह के हैं। एक मेंटल है, एक फिजिकल है, एक रूप है, एक नाम है। तो रूप और नाम जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, तो इसलिए उसको कहा वियुक्त प्रत्यय। तो आप देखेंगे उसमें कंडीशनैलिटी क्या है, रूपिनो धम्मा रूपिनम धम्मानम वियुक्त पच्चय न पच्चय। तो अगर रूप धम्म जो है अगर वो कंडीशनिंग फैक्टर है और कंडीशन फैक्टर रूप धम्म है तो भी ये विपयुक्त है, और रिवर्स केस में भी रूपिनो धम्मा रूपिनंग धम्मानंग विपयुक्त पच्चय न पच्चय। तो दिस इज अ डिसोसिएशन, तो वर आर डिफरेंट टू कैरेक्टरिस्टिक। तो समझाने के लिए हमको इस तरह से लिखा गया। तो रूप धम्म जो है वो अरूप धम्म से कैसे कंडीशन करेंगे, कैन यू रिमेम्बर, हमने अभी चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। रूप धम्म अरूप धम्म को कहाँ कंडीशनिंग करते हैं, कैसे कंडीशन करते हैं रूप धम्म। जैसे आंख, आंख किस कंडीशन करती है, वेदना, परसेप्शन, सब या विज्ञान इटसेल्फ, विज्ञान। उसकी जगह जब भी आलम्बन होगा ऑब्जेक्ट बनेंगे वो,
So there will be a roop, which will be an object, and the mental states will arise from that. रूप धम्म, जब रूप धम्म को प्रारंभित करते हो, इसका मतलब ऐसे आलम्बन प्रत्यय। और अरूप धम्म तो सहजात में भी होता ही है, हम पढ़ते आ रहे हैं चित्त समुत्थानानं रूपानं, चित्त के साथ साथ दूसरे मेंटल फैक्टर भी होते हैं और रूप भी जागता है उसके साथ साथ, हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसको एडिशनल टू डिस्टिंग्विश कि भाई ये दोनों चीजें अलग अलग कैटेगरी की हैं, एक प्रत्यय डाला गया, विपरीत अभियुक्त प्रत्यय, या डिफरेंट काइंड्स। देखिए हर एक के अपनी अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए सारे कंडीशनैलिटीज बनाई गई। अब ये तो हो गई दो, फिर बाकी की जो चार बची हैं उनमें से दो एक जैसी हैं, दे आर सिमिलर कैटेगरी, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरली फॉर एकेडमिक रीजन, ऐसा कई जगह लेडीज है वो भी कहती हैं, बट स्टिल इट्स गुड टू नो देम। एक है अथि बच्चे, अथि मतलब विद्यमान है, ये एग्जिस्ट करेगा, तो क्या उसकी कंडीशनैलिटीज हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चत्तारो खंदा रिपिनो अन्यमन्य अथि बच्चे न बच्चे हो, इसका हमने ट्रांसलेशन क्या किया, चारों अरूप खंड विद्यमान प्रत्यय के अनुसार एक दूसरे से संबंधित है। चत्तारो महाभूता अन्यमन्य अथि बच्चे न बच्चे हो, ओकंति खन्ने नाम रूपम अन्यमन्य अथि बच्चे न बच्चे हो। Kindly try to remember where this whole thing had come earlier. चित्त चेतसिका धम्मा चित्त समुत्थानानं रूपानं अथि पच्चेन पच्चयो, महाभूता उपादा रूपा अथि पच्चेन पच्चयो। ये सब आपको याद आता है, कहाँ आए थे पहले? All these conditionalities we have already seen this relationship. सहजात में थे, हाँ जी, सहजात में they are exactly the same things. तो क्या कहा जा रहा है कि वो साथ उत्पन्न हो रहे हैं, और उसका मतलब अच्छी मतलब वो हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं। जब वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस सारी ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो कई कंडीशनैलिटी ऐसी हैं जिसमें वो एग्जिस्ट नहीं करते, एक बार जाते हैं वो खत्म होते हैं तब दूसरा आता है, तो उसको कहा नत्थि बच्चे। तो आप बता सकते हैं नत्थि किसमें होगा, कि कोई चीज कोई धर्म खत्म होगा फिर नेक्स्ट जागेगा। जस्ट वी हैव डिस्कस्ड इट। चलिए we'll not tax you too much, so we'll see that next. अब ये तो एक पार्ट था इसका अथि का, दूसरा पार्ट अब देखिए। अब वो आयतनों की बात हो रही है। चक्षु आयतनम चक्षु विज्ञान धातु या तन संपयुक्त कानं च धम्मानं अथि पच्चेन पच्चयो, सोतायतनं गानायतनं जिह्वायतनं कायायतनं। तो ये सब रूप आ गया। एक और कैटेगरी, तो ये किस कैटेगरी के थे आपको याद है, जिसमें ये 5 इंद्रियां जो है हमारी, वो कॉरस्पॉन्डिंग विज्ञान को कंडीशन कर रही हैं। पूरे आश्रय पश्चन, they are supporting it. Eye is rising of ear is supporting it. उसमें भी था, तो लेकिन यहाँ पे भी आया, इसका मतलब वो not only are they supporting it, but they are also present during the duration of the arising of that particular chitta. सर पूरे जात में भी था सर, पूरे जात बच्चे, पूरे जात बच्चों में भी, पूरे जात में भी होगा। So you can see that more than one relationship present. And then yet another रूपायतनं चक्षु विज्ञान धातुया तन संप्रयुक्त कानं धम्मानं अथि पच्चेन पच्चयो, then सद्दायतनं गंधायतनं रसायतनं पोटब्बायतनं, and then again the last part of it, क्योंकि उसमें भी था रूपायतनं सद्दायतनं गंधायतनं रसायतनं पोटब्बायतनं मनोधातुया तन संप्रयुक्त कानं धम्मानं अथि पच्चेन पच्चयो, यम रूपम निस्साय मनोधातुया च मनोविज्ञान धातु च वर्तन्ति
तम रूपम मनोधातुया च मनोविज्ञान धातुया च तन संप्रयुक्त कानंदम मान अतिपच्चेन पच्चे. Exactly same things were in another conditionality which you already studied. You remember? अब हम इन इंद्रियों की बात कर रहे थे, अंदर की इंद्रियों की, अब बाहर की जो उनके विषय हैं उनकी बात कर रहे हैं. रूप शब्द गंध विषय है, तो विषय क्या होंगे? वो ऑब्जेक्ट होंगे इंद्रियों के, तो वो आलम्बन प्रत्यय में होगा, because these are the objects on which the corresponding consciousness arises. So there also during the arising the object has to be available. ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट आया और चला गया, तो इसलिए कहा कि वो अच्छी. तो इसलिए अधिकतर केसेस में आलम्बन में भी, सहजात में भी, निश्चय में भी अथिपच्यो भी एप्लीकेबल होगा. अब आ गया नथिप्रच्यो. मैंने आपसे पूछा था, आप देखिए वो आंसर आपको इससे मिल जाएगा. समनंतर निरुद्धा चित्त चेतसिका धम्मा पट्टुपन्नानं चित्त चेतसिकानं धम्मानं नथिपच्येन पच्ये. चित्त और चेतसिक धम्म जो बिल्कुल अभी अभी निरुद्ध हुए हैं, वे अविद्यमान प्रत्यय के अनुसार इस समय के चित्त और चेतसिक धम्मों से संबंधित हैं. मतलब एक मेंटल स्टेट खत्म होगी तभी नेक्स्ट जागेगी. जो अनंतर पच्यो था और समानंतर पच्यो में था ना, एक के बाद एक के बाद कंटिन्यूटी जो बनी हुई है, उसमें the first state has to end, then only the next will arise. It cannot be that this and this are present at the same time. So to indicate that fact is this conditionality has been introduced. So जहाँ जहाँ समानंतर होगा, अनंतर होगा, वहाँ पे नथि पच्य होगा. So it is a kind of explanation of the whole phenomena more explicitly. कि अनंतर का मतलब है कि एक मेंटल स्टेट, एक चित्त की, एक चेतना, चित्त समाप्त हुआ तो दूसरा चित्त जागेगा, फिर वो समाप्त होगा फिर तीसरा जागेगा. So this is how the अथि and अथि are distinguished. और जो दूसरे बाकी हैं वो एग्जैक्टली इन्हीं का रेप्लिका है. विगत का मतलब हुआ लुप्त, जो चला गया, तो इट इज सेम एज अविद्यमान. और अविगत जो है इट इज सेम एज अथिपच्य. आप पूछेंगे क्यों लिख दिया भाई इसको, तो उसका कोई खास आंसर नहीं है, बट एक जगह मैंने पढ़ा था कि वो इस बात के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा ना समझे कि वो थे ही नहीं. नथी बच्चों से ऐसा लगता है ना कि अगर उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो पाए तो उन्होंने कंक्लूड दैट इट नेवर वाज देयर, वो है ही नहीं, एब्सेंट एवरीथिंग. इफ यू ट्रांसलेट इट एज एब्सेंट, अविद्यमान, एंड देन सेइंग कि नहीं अविद्यमान तो थे लेकिन वो थे कभी ना कभी, तो वो डिसअपियर हो गए, disappeared or they are still there. And some of the scholars have mentioned कि basically दो extreme views जो हैं, दिट्ठियाँ जो हैं, एक eternalism और एक annihilationism, उन दोनों को से इसको रिलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. They are essentially trying to show that अगर चीजें समाप्त हो रही हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो समाप्ति हो रही है, फिर वो जागती भी है. और अगर चीजें जागती हैं तो ऐसा नहीं कि वो जागी रहती हैं, वो समाप्ति होती है. और एक सूत्र भी आपको याद होगा, एग्जैक्टली ऑन दीज लाइंस, सुत्ता बुद्धा टेल्स महाकच्चाना that once who sees the arising of the phenomena, he will never go in for annihilationism, and one who sees the dissolving of the phenomena, he will never go for eternalism, because he knows things dissolve. तो उस सेंस में भी कई स्कॉलर्स ने इसको उस तरह से समझाने का प्रयास किया. So this is what is the 24 conditionalities. एक बात पूछनी थी आपसे, ये जो विद्यमान है और लुप्त है, Yes, एक में निरुद्ध हुए और एक में लुप्त हो गए, basically मतलब दोनों में अब जो समझा रहे हैं वो कि लुप्त होना जो है वो निरुद्ध होना नहीं है. नहीं, same है. It is only a technicality. These are introduced primarily for academic reasons to make things more clear. There's no Otherwise they mean the same. because यहाँ पे निरुद्ध शब्द है तो मैंने उसको निरुद्ध ट्रांसलेट कर दिया.
तो इसलिए नत्थी और विगत और अथी और अविगत दे आर एग्जैक्टली सेम। तो अगर अथी प्रत्यय कहीं पे होगा तो अविगत भी होगा, नत्थी होगा तो विगत भी होगा। यू विल फाइंड इन एवरी कंडीशनैलिटी दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उसके अगर आप ये पढ़ेंगे भी जो कंडीशनैलिटी है, दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग, just the name is changed. So I don't want to repeat that here. इस प्रकार से हमारी 24 कंडीशनैलिटीज पूरी हो जाती हैं। Now we must see how do we really use these in what, how does it help us in Pratyachya Samutpad. So let us try to see that. Maybe I will involve you all in discussion rather than so what are the Pratyachya Samutpada links? Let us try to see whether we can figure out क्या हो रहा है हमने। पहला लिंक क्या है प्रत्यक्ष समुत्पाद का? अविद्या पच्चय संखार। सो अविद्या और संखार में क्या रिलेशनशिप है? वहां पे तो कहा पच्चय। वी वांट टू नो व्हाट इज दैट पच्चय। We can try and guess on the basis of whatever we have studied. कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया हुआ होगा ना। You can keep the book with you. अच्छा रहेगा। You may not remember. You can keep that book and open it up with you. आरंभन तो होगा ही सर। हाँ जी, आरंभन तो होगा ही। आरंभन होगा नहीं होगा? किस केस में? उसके ऊपर डिपेंडेंट है। किस केस में होगा ये आपको बताना पड़ेगा। एक केस में होगा। एक्चुअली the answer to this question will depend on what kind of sankharas. अच्छा। Because sankharas can be wholesome and sankharas can be unwholesome. अविद्या can condition, हम तो normally कहेंगे अविद्या से तो unwholesome ही condition होगा, but we have studied it can condition wholesome also. That's a pretty different from the usual understanding. So considering first the unwholesome देख लेते हैं पहले, जो हमारी सामान्य समझ है कि अविद्या से कोई अनहोलसम संखारा कंडीशन होता है। तो कैसे होगा वो, किस सेंस में होगा, क्या उसकी रिलेशनशिप होगी? दैट इज जस्ट राइट थिंग। आप बुक में देखिए, एक जस्ट क्विकली। हेतु भी हो सकता है शायद। ऑफ कोर्स अविद्या इज, व्हाट डज अविद्या स्टैंड इन टर्म्स ऑफ? इट्स अ मोह, इट्स अ मोह, इट्स अ हेतु। भी बन सकते हैं, ये कारण मोह, when we take it as delusion, moh, then it is a hetu. It's a dominant thing which sustains our mental state very strong. That is one. Or what else? कर्म पच्चय भी हो सकता है सर। So actually, I do not comment. What is avidya? Is it किस कैटेगरी में आता है? चार अल्टीमेट ट्रुथ्स है ना, चित्त, चेतसिका, रूपा एंड निब्बाना। निब्बाना को तो हटा ही देते हैं हमारे। रूप, चित्त, चेतसिका, किस में आते हैं ये? चेतसिका में आएगा। ठीक है। और संखार? अविद्या पच्चय संखारा करें। अविद्या तो चेतसिका, इट्स अ मेंटल फैक्टर। व्हाट इज संखार? संखार इज आल्सो मेंटल फैक्टर। तो दोनों के दोनों मेंटल फैक्टर्स हैं। तो हम तो इस वाले कंडीशन को हम बहुत रिपीट कर चुके हैं। चत्तारो खंदा ऋतुनो सज्जय जात पच्चे न पच्चयो चत्तारो खंदा रूपिणे।
अन्यमन्य पच्चे न पच्चे, isn't it? You read it so many times and we know कि सारे चेतसिक विज्ञान के साथ 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 जाते हैं. So what will be the conditionality therefore? Sehajat. Sahajata as well as Anyamanya, Sanyukta also perhaps. Amprita also, Athi also, because it has to be present, Avigat also, it's also a support, so it is Nisay also. आश्रय भी तो होगा. हाँ, so these are the conditionalities. Hetu, Sahajat, Sampayukt, Anyamanya, Nisay, Athi, Avigat. इतनी कंडीशनैलिटीज ऑपरेट करती हैं जो हम कहते हैं अविद्या पच्चय असंखारा. इतने तरीके से वो बच्चा है जो ऑपरेट करेंगे, जो कि एक जनरल कंडीशन में. बट देयर विल बी मेनी स्पेशलाइज्ड कंडीशन आल्सो. वो डिपेंड करेगा कितनी इंटेंसिटी की अविद्या है, कितना डोमिनेंट है. अगर वो बहुत डोमिनेंट है होल रॉन्ग व्यू, देन इट बिकम ए अधिपति, इट विल डिटरमिन एवरीथिंग. देन अगर वो बहुत स्ट्रांग है विद्या, हमारे को बहुत ज्यादा डिल्यूजन है टोटल, then that becomes the dominant character and it determines everything else. So it can become adhipati pachya also. तो कोई रॉबरी कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, तो then that avidya is down. किसी को लगता है कि मैं इसका मर्डर करने से मुझे बहुत स्वर्ग मिल जाएगा, तो obviously that's adhipati pachya. And अगर उसके subsequent चित्त धाराएं देखें तो then there will be also a can be long-term effect of it, Upanishad, which will be another conditionality created by it. So what is the significance of the fact that there's so many different ways in which they are related? That is avidya and sankhara. The fact that they can be related in so many different ways. Yeah. So उसका क्या significance हमें क्या समझना चाहिए उसको? To see that the nature of relationship, these are actually conditionalities are actually describing the nature of relationship, which means कि अविद्या के साथ संस्कार साथ जागते हैं, वो एक दूसरे को असर करते हैं, उस पे आधारित हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूट है, और वो जो संस्कार होगा, वो जो चित्त की चेतना जागेगी उसके साथ, it will be quite strong. So this is what we learn from all of them together. That makes sense. Thank you. और अगर अविद्या के कारण हम रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा हो रहा है हमारे को, अपने पे गुस्सा आ रहा है, यार मैंने बहुत अभी भी इतने साल हो गए अभी भी गुस्सा अविद्या जाग रही है, then अविद्या becomes an object and then it conditions the arising of anger. So it depends on how we are responsible, how we are helping it. And then we can come now to another possibility. What will happen? How will avidya generate wholesome karma? Let's just understand. कैसे होगा विद्या हो और wholesome karma करते हैं? ऐसा भी हो सकता है क्या? हमने पढ़ा था. Let's visualize as meditators, as practitioners. Under what condition does avidya become a cause for generating wholesome chitta? Some selfish. जी. Sorry, go ahead. Dipti. I was just giving an example कि कभी-कभी गुस्से में कोई गलत काम हो जाता है और फिर उसको करेक्ट करने के लिए कुछ व्यक्ति मान लीजिए उसी को आलंबन बना के अपना चरित्र सुधारने लगे. Yes. An example. If one recognizes कि देखो अभी भी मेरे में सेल्फ व्यू है, अभी भी डिल्यूजन बैठा हुआ है, क्या इतने साल हो गए अभी भी मैं अपने को मैं मानता हूँ, उसने कुछ कह दिया और मैं बुरा मान जाता हूँ.
then he says, "Nee, I should work hard. I should now practice better. So I should do some good deeds ताकि इसका इफेक्ट कम हो." जो समाधि का अभ्यास करता हूँ एक्चुअली उसी कारण हो रहा है। मेरी जो मोह है वो इसलिए पूरा है कि समाधि ठीक नहीं है, या विपन्या बहुत वीक है, मैं बार बार सेल्फ व्यू में अटक जाता हूँ। Avidya can become a cause of wholesome karma. So what will it be? What will be the conditionality now? It will become it has to be an object. It has to become an object then. So it will be a Arambana Paksha. Can it be a Sahajat also? Can Avidya and Kushala Chitta be Sahajat? Won't be, never. Avidya is an unwholesome mental factor. It can never give rise to a wholesome mental factor. It can be an object, and then the next mental state will arise, which will be wholesome. That's the understanding which will, of course, for us, one mind state, we mean average minds. हमारे लिए तो एक चित्त स्टेट देखना पॉसिबल नहीं है, बट वी नो क्यूमुलेटिवली अगर हमारे में विद्या के प्रति सजगता आ गई है तो बार बार ये हो रहा है, देन वी बिकम मोर केयरफुल, धर्म संवेग जागता है। अभी देखते बार बार एक जो हमारे लिए मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ अविद्या है कि सेल्फ भी जाग जाता है, अरे मेरे को कुछ कह दिया, मेरे को कुछ हुआ, सो वी रियलाइज कब तक चलेगा भाई, चलो और साधना करो, देन दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर noticing the arising of the self view, then we practice and things like that. So that's how so you can see how many kind of conditionalities there are. And if one starts doing jhanas and other thing to raise the samadhi, then he is moving into another domain of sankharas, which are imperturbable sankharas. There are so many possibilities. Avidya, Pachya, Sankhara has so many possibilities. So these can't get discerned unless we have that more minute. And I have taken only few. Actually, if you see the comprehensive literature, the huge thing, I have taken few only, mostly from Vishuddhimagga. So you can also refer to that Vishuddhimagga chapter. It is included as a part of development of Panya. That chapter. So, and there are pretty large number of, not large, a few people have commented on how to, because integrating Tikapatthana is quite a tedious job. So very few people who have tried to do it. But जैसे हमारे ये जो है comprehensive manual वाला, इसमें उस तरह से नहीं लिंक किया गया, उसको और तरह से लिंक किया गया, माइंड कैसे माइंड को अफेक्ट करता है, माइंड कैसे मैटर को अफेक्ट करता है, उस हिसाब से then you have to figure out yourself how will it operate. But some such thing is given. Mostly people have done like that also. But some people have written. There's one Burmese, I think, scholar who has written a book on Tikapatthana in the light of Buddha. So, but it is so elaborate that you really get lost. So, उसमें से extract कर पाना अपनी चीजें, it's quite a challenge. So, I try to extract as little as much as I could understand. So they describe all the 89 kinds of chittas and 50 kinds of chetsikas, and try to relate it. Becomes too difficult to figure out. I've just taken out some specific. Vishuddhimagga is very less specific, comparatively specific. तो एक हमने लिंक देखा, इसी तरह से एक दो और देख लेते हैं. Avidya Pachya Sankhara, then Sankhara Pachya Vinyana. Let us see that now. Sankhara Pachya Vinyana. In the light of this discussion, I think we may have some ideas.
Now, it again will depend on whether you take it as 3 life model or you take it as one movement to movement model. Because Vijnana will have that connotation. So we have to see that. Sankhara Pachya Vijnanam, are we talking of it as the relinking Patisandhi Chitta? Then there will be certain conditionalities. If you are talking of in the day-to-day life, then there will be some other conditionalities. So, संखार तो बहुत सारे होते हैं. कौन सा संखार है जो कि which leads to next Vijnana? पटिसंधि चित्त, संधि चित्त का बेस कहाँ से? च्युति, च्युति से पहले वाला धम्म the death चित्त. च्युति चित्त तो is basically a passive one. उससे एक माइंड मूवमेंट फैक्टर होता है which is कि मरने से पहले कौन सा ऑब्जेक्ट जागा, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट जागा और उसके हिसाब से किस तरह का. So which is basically what karma arose. So this is what Chetana arose. But Chetana is karma and Chetana is a, what is Chetana? It's a Chetsika. So universal Chetsika present in every mental states. So मरने से एक क्षण पहले क्या चित्त जागा, कौन सा संस्कार जागा, उस संस्कार के हिसाब से विज्ञान जागा. So what will be the relationship between them? Alamban. It's not there's nobody looking at that as an object. और ट्राई करिए. मैंने तो बोल ही दिया था एक्चुअली. दिस कम्मा, दिस कम्मा पच्चयो, दिस इज व्हाट कम्मा इज. आप देखिए कम्मा की दो इंस्ट्रक्शंस थी ना. कम्मा वाले में कम्मा पच्चयो की देखिए किताब खोल के, उसमें 2 इंस्ट्रक्शंस थी. एक थी नाना खनिका which means from one moment to another, which are another was चेतना के साथ साथ जो सहजात चलता है. It can be सहजात also. Sankhara is also, Vijnana is this, can be सहजात because the Gyan Chetana is arising along with it. So it is Kamma. And what will be the kind of influence? It will be a decisive influence. So it is not just ordinary ashray, but a decisive ashray. क्या कहते हैं? Upanishad बच्चे. So it has a decisive influence. It's transforming. It is taking another body altogether, and all the prominent sankharas getting transferred in that manner. So this is the main cause is therefore karma. But if you really want to understand it deeply, you have to relate it to the previous chitta. Last chitta, the last active chitta of the past life. Last active chitta of past life or iska relationship देखना. So then you have to see in that sense. So it becomes quite complicated. Then there will be with relationship with the past mind. Active chitta and Chati chitta is the last chitta which has arisen and fallen away. और Chati chitta गया था, Patisandhi chitta जागा. उसके साथ क्या उसकी relationship होगी? It will be Anantara Pachyo. It is just next chitta which is arising from there. Anantara Pachyo, Samanantara and what else? Natti Pachyo. Because that will die, then this will arise. So this will be the relationship with respect to the past chitta. Then with respect to what is the object which appeared at the last active chitta. So that
And because प्रतिसंधि चित्त का भी हर एक चित्त का कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चित्त ऑब्जेक्ट के बगैर तो होता नहीं है। तो उस प्रतिसंधि चित्त का ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि वही है जो लास्ट एक्टिव चित्त का ऑब्जेक्ट है। Then that relationship also has to be understood. So that, can you give an example of this? चेतना, जैसे चेतना है based on the last active thing, उसका exact उसमें कौन सा कम जागेगा उसकी भी अपनी एक सीक्वेंसिंग है। It may feel too overwhelming, so if you feel, you can ignore it. तो कहा जाता है कि सबसे अगर which is the most probable karma which will arise when I die, just before my death, which karma will arise? So there's a sequencing which is laid down and which is quite understandable, very rational. First is जो वेटी कर्मास है, नीचे कहा जाए गरु का कर्म, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म किया है हमने. It could be wholesome or it could be unwholesome. Strong wholesome कर्म में ध्यान are taken to be strong wholesome कर्म. तो अगर हमने कोई ध्यान को सचमुच में accomplish किया है, then that is going to be this chitta which will arise just in the last active mind. Chitta will be of jhana. That object will arise, and that will become our chitta, which will condition the kamma which will arise and which will condition the patisandhi chitta. But there are weighty unwholesome chittas also, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं कई बार. Killing mother, father, killing an arahant, injuring a Buddha, and causing schism in the Sangha. These 5 are called Garuka Kamma, Garuka Akusala Kamma, which lead to the deepest hell. If these are not there, if these Veti Kammas are not there, then the death proximate Kamma. मरने से पहले अगर कुछ किया है, पूजा की है, पाठ किया है या ध्यान किया है, that, और उससे उसके पूर्व कोई विचार आया और उसने उस पर इंटरेक्ट किया, तो वो then that becomes the object which will affect the next chitta. और कोई death proximate भी नहीं है, मतलब कोई say in a coma or something, then what has been this general state of mind, average state of mind of the person? So that will determine the next one. So this is how the, and last of all is अगर वैसा भी नहीं है, कोई predominant वो भी नहीं है, तो then any other sankhara which may arise at that moment, which is kind of unspecifiable, that will become, that will lead to the new vijnana. That sankhara will lead to new vijnana. So that's how these sankharas lead to different kinds of vijnanas and leading to birth in different realms, leading to birth with different namarup and all that, that will come later. So this is how that is described. So it becomes more complicated, so we can leave that. But at least we understand that basic main cause here is the kamma. The conditioning is to decisive support. Then we can come to the next, Vijnana Pachaya Namarupa. What do you think? नाम का क्या, किसको नाम कहते हैं, you remember? नाम are a series of mental factors. जो 7 यूनिवर्सल मेंटल चेतसिक है, उनमें से 5 को नाम कहा जाता है. रस, वेदना, संज्ञा, चेतना एंड मनसिका. So नाम is also चेतसिका, a bundle of चेतसिका, which are always present. And Rupa, of course, is the matter. So when you say Vijnana Pachaya Nam Rupa, then what will be the relationship?
Sir, Pureja, Jnana and Vijnana and Chetsikas, they can rise together. ज्ञान के साथ साथ चेतसिक तो होंगे, अकेला तो राजा चलता ही नहीं है कभी। ज्ञान को तो राजा कहा जाता है ना, वो तो राजा है तो उसके साथ सारे मंत्री साथ ही चलेंगे। दैट्स अ गुड वे ऑफ रिमेम्बरिंग। चेतसिक तो विज्ञान के साथ ही चलेंगे, अकेले। पूरे जात इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस रूपस। I has to be born first, I base, before I see and seeing can happen. So it will be सहजात, and then सहजात के साथ जो बाकी मंत्री हैं वो अपने आप ही चलेंगे। कौन कौन से मंत्री हैं सहजात के? फेलो मिनिस्टर्स, अन्य मन्य, विद्यमान, निश्चय, संयुक्त, अथि, अविगत. But there are some more which are present here, which are specific. Do you remember Vijnana as another important role in the various conditionalities? Vijnana is also a ahara. And what more? One more. Vijnana is manoandriya. So it's the indriya also. So many conditionalities will therefore occur. So Vijnana conditions the nama through Sahajat, Anyamanya, Nissay, Sampayut, Ahar, Indriya, Athi, Vigat. And also one more is Vipaka, because this Vijnana is actually Vipaka Chitta. Why is it Vipaka Chitta? It is a result of karma. So this is how we develop the whole thing, and you can see how many multiple relationships there emerge, and each of them have a specific role to kind of message to give us. वो उसका आहार भी है, इंद्रिय है तो कंट्रोल करता है, साथ जागते हैं और साथ ही सोते हैं, साथ ही समाप्त होंगे, प्रेजेंट रहेंगे. So many characteristics of the relationship are described. Is it getting through or should we stop? And leave it for you to find out. That's another way. You can refer to the, it's getting too heavy. You can stop and refer to the Vishuddhi Magga, that chapter. You will see, and then you can slowly absorb that. When you explain, it becomes clear, but we have to kind of apply our minds. बैठ के सोचना पड़ेगा काफी इसके लिए. Then we have Namarup Pachya Salayatan. नाम रूप जो है कंडीशन करते हैं. सिक्स सेंस बेसिस. अब सिक्स सेंस बेसिस में 5 तो रूप है और छठा सेंस बेस जो है वो चेतसिक है, मनन. So we have to distinguish between them. Conditioning will be different. So Nama is a various group of Chetsikas, mental factors. How can they condition Rupa? Because sense basis to Rupa है, 5 sense based to रूप है. तो जो mental factors हैं वो रूप को कैसे condition कर सकते हैं? Condition it through अच्छा जाता. Because the sense base would have to be is essentially a product of karma. So it is there at that moment that Tansamutthana and Rupana, whatever arises along with that chitta. So the sense bases are available. They are being supported by the there's not
creating, this is only supporting. Nam Rupa support the sense basis through Pachayata. And then there is Vipayutta, I would say dissociated, is of a different kind. And as far as the mind base is concerned, mind base means so how will mind base be concerned? Because mind base jo hai, wo mental factor hai. So it will be Sahajata Prachya. So it will be different relationship. So then all the deputy ministers of Sahajat will carry on with it. Anyamanya, Nisay, Sampayutta, Ati, Avigat, they all carry on. What exactly Rupa refers to can also be discussed. Rupa can refer to the 4 Mahabhutas, it can refer to the physical Rupa itself. So then there will be different connotations of that. So that becomes that, I'm just mentioning it because that you can see is raises the scope to a very large extent. But we'll be satisfied with this much. Then we come to next, Salayatan Pachaya Prasna. What is Salayatan and what is the Prasna? What is the relationship? What do you think? Here again, you'll have to distinguish between 5 physical ayatanas and 1 mental ayatana. तो जो 5 physical ayatan है, उनका first से क्या relationship होगा? What is first? First is also a chitsik. It's a mental factor. So what will be the relationship of the, say, I base to then first? I base has to be earlier present, so it has to be Pure Jata. And it will be support. And it is an Indriya. I is an Indriya, dominant role. But there are 2 different kinds. One is my mental factor, other is Vipayutta. So that's how we distinguish between them. And when it comes to mind base, what will happen? Salayatan, if Salayatan is mind based, how will it condition Phassa? They're both Shetsikas. They rise together. They're all Sajata Pachayo. And all the deputy ministers of Sajat will continue with it. Okay? So that's how we carry on with the others also. I think I better stop here and summarize the whole thing so you can refer to them. I've just given you a glimpse of all this by looking at what do we really make use of this Patthana understanding in our daily life. I'll spend some time on that. That may be more useful. बाकी जो सी detailed conditionality है आप इसमें देख लीजिएगा. And if somebody is very much interested in difficulty, then we can discuss it personally. So I'll made it on some points. I'll briefly speak it out. How does it help us? The first and very simple but very profound thing is, हम जब कहते हैं कि हम पुण्य करना चाहते हैं, wholesome deeds करना चाहते हैं, merits बनाना है, पारमी बढ़ानी है, तो वो कब होंगे? Happen only when there are wholesome roots. कुशल चित्त के wholesome roots होने चाहिए. और अगर 3 हेतु हैं, मैंने तब भी चर्चा की थी, अगर तीनों हेतु हैं, then the roots are strong. Chitta has a very strong, and then the sustenance will be strong, impact will be strong. तीनों रूप कौन से हैं? wholesome, alobha, adosa, amoha. So all of them should be there. alobha, adosa तो basic prerequisite है ही, उसके बगैर तो wholesome चित्त होगा ही नहीं. But amoha भी होगा, then we make it really strong. The typical example,
यू आर सिटिंग इन अ कार एट रेड लाइट और वहां पे कोई मांगने आ जाता है, अब वो ठक 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 कर रहा है, एंड गेट इरिटेटेड एंड देन यू से उसको दे दो यार कुछ, जाने दो. That's not a दान. That's not a wholesome deed. I may think I have done wholesome deed. मैंने उसको 1 रुपया दे दिया, कुछ दे दिया, बट मेरी चित्त की चेतना क्या थी? Not like that. What was the root behind it? Was it wholesome or unwholesome? So you can see that, and that manifests in terms of impact, because चित्त समुत्थानानां रूपानां. जैसा आपको ऐसा, if you do a apparently wholesome deed with unwholesome mind state, the mind gets constricted, the body gets constricted. While if you do it with a wholesome chitta, with proper understanding, then mind becomes light, flexible, there is joy, there's pleasant feeling. So this is how we can easily see that karma is coming from Chetana, not from the physical action. And what is Chetana? Chetana is a mental factor which arises because of certain conditions. So there's no one who is actually doing any deed strictly in that sense, in the ultimate sense. Because of certain conditions, Chetana is arising, which may be Kushala or Akushala, and deeds are being done. So the main objective of this whole exercise was to demystify the doership, and similarly demystify the enjoyership. Enjoyership means, what is the enjoyment we get? It's all Vedana, feelings which arise. It's the Vedana which feels unpleasant, neutral, or pleasant feelings. There's no me who is feeling it. So if we look at it again and again and again in that sense, we begin to see that there's no enjoyer, no experiencer or enjoyer of experiences, and no doer of actions, which are two of the most stubborn illusions which create a sense of self. The sense of doership and sense of enjoyership. So just by understanding these things in that manner, you can see. You understand that whatever sense of consciousnesses operate, they're all vipak chittas. They're arising because of karma. I can say I am seeing, I am hearing, that's okay. Conventionally, that's fine. But actually, vipak chitta has arisen, and so seeing is happening. And associated with that, if it is the kushala vipaka, kushal karma ka vipak aa raha hai, तो कुशल कर्म का विपाक है तो प्लेजेंट फीलिंग जागेंगी, सराउंडिंग्स जो इंटरेक्शन होगा ऐसा होगा कि प्लेजेंट फीलिंग आ जाएगी. और अकुशल कर्म का विपाक है तो अकुशल सिचुएशंस होंगी, और अकॉर्डिंगली विल गेट जो चेतना है, जो विपाक चित्त है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की होगी. Again, according to laws of nature, there's nothing random about it. It's just a series of conditionalities which have happened. Of course, we don't know कौन सा चित्त, कौन सा विपाक कब आएगा, ये नहीं मालूम. हाँ, जो साथ इमीडिएटली आता है, जो सहजात विपाक है, वो मालूम पड़ जाता है. जो नाना खनिका विपाक है, कम है, वो नहीं मालूम पड़ता. कौन से क्षण किया और कब जाके उसका रिजल्ट आया, वो मालूम नहीं पड़ता. लेकिन इसी समय मैंने गुस्सा किया और तुरंत मेरे को उसका फल मिल गया, वो मालूम पड़ जाता है. देखो गुस्सा किया और देखो कितना सिर दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बुरा लग रहा है, इमीडिएटली नॉट. But the difficulty arises because of this reason, because of the karma operating in the Upanishaya Pacha, there being a decisive support condition which operates across time periods, across lifespans. So that's what makes it complicated. विपाक चित्त भी आगे संस्कार बनाता है. विपाक चित्त तो सब देखता है. संस्कार तब बनेंगे कि जो हमने विपाक चित्त के साथ जो वेदना जागी, उस पर मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तब नए संस्कार बने.
सिर्फ देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ देखना सिर्फ कहा ही जाता है, वो हम कितनी बार सुना है हमने और समझा है कि नहीं। देखने में देखना, सुनने में सुनना, उसका मतलब क्या है? तो ये मतलब है विपाक चित्त को विपाक चित्त जो है देख रहा है, फिनिश, यू आर नॉट देयर। तो संस्कार नहीं बनता उसके कारण। संस्कार बनता है जब विपाक चित्त के साथ जो चेतसिक जागते हैं उनके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि वो हमको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, प्रिय वेदना है या प्रिय वेदना, एंड देन वी रिएक्ट एंड देन वी क्रिएट संस्कार। अच्छा काम करके मन में थोड़ा प्रीति सी जगती है तो वो भी संस्कार बन जाता है। तो थोड़ी प्रिय वेदना जागे तो वो संस्कार नहीं ना, उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं। प्रिय वेदना को हम एंजॉय कर रहे हैं, मन में भाव जाग रहा है, यार कितना अच्छा काम किया मैंने, और मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, देखो सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है, या मेरी किस्मत इतनी खराब है, कंटिन्यूसली बीमार हो रहा हूँ, देखो कितना दर्द हो रहा है, कितनी बेचैनी हो रही है, and you be taking it personally, taking it personally. Done it. और वो अकुशल चित्त और अकुशल चित्त कैसे, अगर आप संक्षेप में करना चाहें, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसके प्रति हमारा अटेंशन योनिसो मनसिक आ रहा है कि अयोनिसो मनसिक, दैट इज द की थिंग। Is it accompanied by panya or is it not accompanied by panya? That's what is the conditionality, simple conditionality. Then we have seen, वो अभी चर्चा भी हो गई है कि किस तरह से अकुशल मेंटल स्टेट भी कुशल का कारण बन सकती है और किस तरह से कुशल मेंटल स्टेट भी अकुशल का कारण बन सकती है। हमने कुशल चित्त से दान दिया और फिर अहंकार जगा दिया तो उसका उल्टा असर हो गया। This is the kind of relationships which we read in the various conditionalities. Then another, सर जो हमने अभी थोड़ा सा पीछे तो पटिच्च समुत्पाद की जब हम की जिसके साथ जो हमारा प्रत्यय या कंडीशन अराइज हो रही है तो वो बहुत फिक्स्ड होगी क्या? लाइक इट विल ऑलवेज बी इन द सेम हेतु होगा, लाइक अविद्या, हाँ, कंडीशन विल मींस avidya will always be hetu, you cannot be otherwise. It is the root, usko kuch change. So that means condition, so the condition changes when condition changes. Those are conditions. Please understand. मतलब I mean हाँ, प्रत्यय कब हमारे where change lies? When there is a fixed, in the sense, is it a fixed phenomena? Fixed conditionality, समझो, conditionality. इसका अविद्या का क्या असर होगा, अविद्या से संस्कार कैसे बनेंगे, वो प्रोसेस फिक्स है। इस इन कंडीशनैलिटीज के कारण अविद्या से संस्कार बनते हैं। अब वो संस्कार होलसम है वो हम पे डिपेंड करेगा। हमने अविद्या को आलम्बन बनाया और देखा और प्रज्ञा जागी और हमने उससे एक्शन चेंज कर दिया। वो all that we are doing is to describe the possibilities. What are the possibilities? Under what condition these possibilities happen? See, avidya itself, if we are allowing it operation without any awareness, then it will go in that way. अकुशल चित्ती जागे। लेकिन अगर हमारे में awareness जाग गई, अरे अविद्या जागी है, and we make it our object, and we have the panya to see कि अविद्या अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये डिल्यूजन है, और फिर मैं उसको देख के मेरे में इतनी प्रज्ञा है कि वो ये ठीक नहीं है, मुझे इसका त्याग करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? अच्छा, मुझे अपनी साधना पुष्ट करनी चाहिए, चलो मेरे अपना धर्म संवेग बढ़ाना चाहिए, मुझे समाधि का अभ्यास करना चाहिए, मुझे प्रज्ञा जगानी चाहिए, मुझे साधना के लिए और टाइम देना चाहिए, मुझे अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। So it is just describing to you under what condition, what result will happen. That's all. So convert अविद्या तो हम सब में है ना, बार बार जागती रहती है,
If we convert it into an object and we look at it, there's a great possibility of transforming it. But if we don't, if we're not aware of it and allow it to operate, then it will go on its own way. Just operate in a mechanical manner, Avidya will be root and it will produce unwholesome sankharas. So that is the message, very important message. So if you want to look at it carefully. Then another thing you'll recall, there was one conditionality जिसमें Utu Bhojanampi, weather, food, dwelling, people, they are conditioning our mind through decisive support. They have a decisive influence on our mind. So you can see that's why these things are included in our chantings. Asevana, Chabalana, Panditana, Sevana, Pati Rupade Savasoche, Ubdeche Kada Punyata. क्यों इंक्लूड किए इसीलिए इंक्लूड किए because they have a decisive influence on us. People have a decisive influence on us. Associating with fools or associating with wise people will change our whole life. Decisive influence can be phenomenal. It can last huge time. You can see the decisive influence of arising of Gautama Buddha. 2600 साल हो गए अभी तक हम उसका फायदा उठा रहे हैं. See? That is called decisive influence, real decisive influence. 2600 years, people are getting influenced by the existence of that person. So you see, that is a person's contribution, person's influence on us, on the society. Millions of people have been influenced. Here again, we have family members who, in our opinion, we don't get on well with it. What do we do? Do we get out of it? No, then, even if it is unpleasant, situation is unpleasant, then solution is given. Pay attention properly. Yoniso Mansikara. Convert that object, use that as an object, apply Yoniso Mansikara, develop understanding, and see how you can handle that situation. Then this statement which we have read so many times, Chattaro, Kanda, Rupino, Anyamanya, Pachayo, that has very great value actually. So what it is saying is, वेदना, संन्यास, संखार और विज्ञान जो है वो साथ साथ जागते हैं और एक दूसरे को कंडीशन करते हैं. क्या मतलब हुआ? अगर हमारी संज्ञा डेवलप हो, अनिच्छ संज्ञा हो जाए, तो किस तरह की वेदना में महसूस होगी वो बदल जाएगी. See the importance of it, the importance of this in our practice. So if you are practicing for a long time and आपकी अनिच्छ संज्ञा पुष्ट होती जा रही है, तो the reactivity to the feelings will come down. Feelings will then tend towards more and more become neutral or lightly pleasant. Anicca sanya is moving further. And this is what we know when we meditate for a long time. Shuru mein apriya vedna, and then we get into a state which is peaceful state of neutral kind of vedna, mildly pleasant vedna. His mind has temporarily got into a good mood of anicca sanya, and the load of राग और द्वेष का लोड थोड़ा जो वजन है वो कम हो गया. So you get into that and it becomes a part of one's life then. Once you have crossed a certain threshold, आप जहाँ ध्यान करने बैठेंगे and within few minutes feelings in the body will be almost neutral. Unless there is illness or something. Even that gets masked to a great extent. So what does it mean? The
life situation. It has very deep meaning. The life situations can be very unpleasant. But if your anicca sanya is there, they will not cause us disturbance. They will not cause us actual impact on our body in that manner of unpleasantness. It's slowly and slowly getting established in, because pleasant feelings are also anicca, pleasant experiences are anicca, unpleasant experiences are anicca. Then the situation comes and whatever happens, you say it's anicca. Don't take it seriously. And then slowly and slowly, mind gets into a state of upekha bhavana. And then things getting wrong, losses happening, bereavements happening, or great praise happening. Okay, you look at them with much more equanimity than possible. That's the way of developing equanimity. Develop sanya, anicca sanya, for example, and the other sanyas also. Then one more thing you learned from there was the Adipati Pachya. What are the four Adipatis? You remember? चार अधिपति कौन कौन से थे? Chandra, Veerya, Chitta, Mimamsa. What are the? They are called also the Iddhipadas. और एक हमारे लिए जो हम हाउस होल्डर्स हैं, उनके लिए which do you think is the most crucial one? There are things which we can reflect upon and see for us. Chanda. We're going to be changing our, if they're Adhipati, they can change our life. So which do you think would be the our householders especially? Chanda. Sati. Sati. Sati is not a Dipad. से इद्धिपाद में शायद धर्म संवेग जो है एस्पिरेशन है. Chanda is going to be the crucial. What is the chanda we have? What have we choice we have made? Chanda means also choice. Mr. Manikara. It is translated usually as aspiration or desire. It basically means the choice. What choice are we making in life? We are householders and we have to earn money. No doubt, we can't run away from that. But is that our ultimate choice? Is that the Adhipati? Is that what we give the great Usvidana? Yam yam dhammam garam katva. जिस धर्म को आप गौरव देते हैं, महत्व देते हैं, वो आपके लिए अधिपति बन जाता है. So, and that is directly related to the chanda. What is our chanda? What is the aspiration we have? So for householders, that is the key thing. Because once the aspiration is strong, chanda is strong, everything will follow. Virya will follow, chitta will follow, and Vimamsa should follow. That is a thing about which we have to develop, because Vimamsa is panya, which we have to develop. It may or may not follow. For that, we have to work to develop that panya. But the movement will start in a very big way. So what do we learn from that Adhipati Pachya? That as householders, chanda is the key thing, and I should look at it. What is it that I give life importance to? This is your last चौथी पांचवी जो condition थी, yam yam dhammam garum tatva. So let me just read it. I find it very, very inspiring to read it. यम यम धम्मं गरम कत्वा ये धम्मा उपज्जन्ति चित्त चेतसिका धम्मा ते धम्मा ते संग धम्मान अधिपति बच्चे. जिस किसी धम्म का हम आदर करते हैं, उससे जो अन्य चित्त एवं चेतसिक धम्म उपजते हैं, वे पूर्ववर्ती धम्म अधिपति प्रत्यय के अनुसार बाद वालों धम्मों के संबंधित हैं. मतलब जिस चीज को हमने कंडीशनिंग फैक्टर बनाया, जिस चीज को हमने गौरव दिया,
वो कंडीशनिंग फैक्टर बन जाएगा हमारे चित्त की, चेतसिक की, सबका, एंड दैट विल डिटरमिन आवर लाइफस्टाइल. That's a very powerful lesson which I think we should really deeply reflect upon. What is it that drove Prince Siddhartha out of home and palace? Chanda, basically. Such strong chanda arose on seeing those objects, seeing those scenes. And then, of course, zeal will arise, and hopefully, but that can be depend on the strength of the chanda. Really. उसके चित्र भी चाहिए, चित्र भी होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन भी आती हैं. कई लोग, हम लोगों में, काफियों में स्ट्रॉन्ग छंदा है, वीर्य भी जागता है, लेकिन जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं, चित्त जो है वो आ जाता है. That is the chitta idipala. Basically means you have to prepare the minds suitably. How? By samma vayama. Prepare it by samma vayama, and then khanti, so that difficulties on the path will be able to handle it. And have that wisdom. Discernment, of course, is crucial. तो वो तो independently हमको डेवलप करनी ही पड़ेगी to understand whatever किसी भी गोल, अगर वर्ल्डली गोल है उसके लिए भी वर्ल्डली विजडम चाहिए होगी, और जो स्पिरिचुअल गोल है उसके लिए स्पिरिचुअल विजडम की जरूरत है. अम्मा के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, तो इसको छोड़ देते हैं. जी, और जो माइंड बॉडी रिएक्शन की बात करते हैं वो तो काफी हद तक इसमें आई जाती है. हर जगह हमने सुन ली है, चित्त समुत्थान रूपान, you read it again and again. Depending on the state of the mind will be the rupas which will be generated, and that's how our body becomes ill or our body becomes strong. And we all know, मन की स्थिति अच्छी हो तो many small aches and troubles get overlooked. और नहीं अच्छी हो तो even small trifles really bog us down and we get overwhelmed or totally inoperative हो जाते हैं. So I'll stop there. Sir, Is there any comments or questions? sir, I have one question, but अगर मेरा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा तो प्लीज. जो धम्म है और जो प्रत्यय है, रूप धम्मों से संबंधित है, या जब दोनों ही ऐसा, मे बी इट्स अ बिगनर्स क्वेश्चन, बट ऐसा लगता है जैसे धम्म बोले तो रूप धम्म से संबंधित है, तो ये ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है. Dhamma is a generic term which means anything. It could be a mental factor, it could be रूपा. They're all. So मैंने पहले सबसे शुरू में कहा था ना, जो बेसिक अभिधम्मा का कॉन्सेप्ट ये है that all that we experience is a dhamma. So dhamma by itself is a shorthand for whatever we experience. So rather than writing chitta, chetsika, rupa and then defining कौन से चित्त कितने रूप, you use the term dhamma is everything. यम यम धम्मम गरुम करता, मतलब किस चीज को आप महत्व दे रहे हैं. It could be a person, it could be a thing, it could be a concept. आप आइडियोलॉजी को महत्व दे सकते हैं तो आप उस आइडियोलॉजी आपको गवर्न करेगी सारा जीवन आपको. So people are driven by ideologies to an enormous extent, which is a concept. So anything which you experience, that is that. So I was just seeing जो सम्मादिट्ठी सूत्र में बोलते हैं कि जो दिट्ठी ये इसमें भी धम्म का यूज किया गया है कि आप जो देख रहे हैं that is also धम्म. Yeah, of course. That's everything. Everything means everything.
Nothing is excluded. Dhamma is all that you experience. Simple thing, very simple. तो आप एक्सपीरियंस तो मैं प्रत्यय भी कर रही हूँ ना, बट मेरी जानकारी नहीं है। प्रत्यय कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं? You don't नहीं, experience वो प्रत्यय. मेरी नहीं Experience प्रत्यय. सर, होते तो है, मेरी जानकारी में नहीं है तो क्या होगा? उसका इफेक्ट तुम एक्सपीरियंस करते हैं ना. आप इफेक्ट, बट इट इज हैपनिंग ना, इट इज हैपनिंग, दैट इज व्हाई। उस कंडीशनिंग को डिस्क्राइब करने का एक नाम दे दिया. उसको एक नाम दे दिया कि हेतु प्रत्यय है, ये अनंतर प्रत्यय है, ये सहजात है. अब सहजात कोई चीज हो ना जिसको आप देख सकते हो. सहजात मीन्स दे आर अराइजिंग टुगेदर, दैट्स इट. Just a name for that, just a concept. You don't experience a concept. You get influenced by it. But इसे अन्य मन्य, इसका मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. जैसे दो चीजें पढ़ी, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इसको हटा दो, दैट इज कॉल्ड अन्य मन्य प्रत्यय. So they are basically methods of describing the relationship between conditioning factor and the conditioned factor. Conditioning dhamma and the conditioned dhamma. एक conditioning dhamma, एक conditioned dhamma. उनका relationship describe करना. So then it will be probably possible then to perhaps draw many state transition diagrams in relation to the conditioned dhamma. That is conditioned dhamma. This conditioned dhamma may arise from this conditioning dhamma in these typical manners, like you explained for Paticca Samuppada. That is. So I think. I don't know whether it will help to do that. हाँ, actually conditionalities इतनी ज़्यादा हैं कि अगर उसको डायग्राम बनाते ना, it becomes a total jumble. अच्छा. उनकी लाइनें जोड़ के वो ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं, और घबरा जाएगा आप देख के. नहीं, I was thinking you take one conditioned dhamma and just imagine what are the ways in which that arises. हाँ, because any dhamma can have multiple roles in different places. Correct. Because basically जो हमने धम्मा डिस्क्राइब किए हैं, या तो वो विज्ञान है या डिफरेंट काइंड ऑफ चेतसिक है, वही डिफाइन किए. You can rise in many different ways. रूप है, चेतसिक है या विज्ञान है, बस. I can understand. Yes. उनके various permutations, combinations हैं. Different types of rupas, different types of vinyanas, different types of चेतसिका. There's so many of them. उनको एक टेबल में बना पाना, make it very brief. मैंने टेबल बनाई है उसमें, but it is kind of skeleton जैसे होता है ना, skeleton type. You can do it for a few typical situations, perhaps. You can do it for our own understanding. Okay. Basically तो ये आइडिया था कि हम चैंट कर रहे हैं तो उसको समझ नहीं, चैंट क्या कर रहे हैं, और जितना उसको समझेंगे और बार बार चैंट करेंगे तो शायद वो परमिएट कर जाएगा हमारे में, एंड देन वील बिगिन टू अंडरस्टैंड. अच्छा, ये सहजात होते हैं, चत्तारो खंदा रूपिनो सहजात बच्चे में कुछ. तो जब हम देखेंगे उसमें अविद्या बच्चे, असंखारा संखारा बच्चे, अविज्ञान विज्ञान बच्चे, नाम रूप बच्चे, सड़ायतन बच्चे, हस्त बच्चे, अवेदना. तो सिंगल जो कम्मा हमारी नॉर्मल लाइफ में, all of these are defined as happening one after other. No, they're all happening simultaneously. Everything is happening simultaneously. They're all arising simultaneously because they're all adjuncts of Vijnana. So we get alert. That's the way things work in nature. And that's one condition. There are so many other conditions. I've just taken one. And then this is only for a case when it is an unwholesome sankhara, only then. And it's only applied to the same lifespan. It's not different lives. So all those conditions, उस condition में ये पहले साथ जो है एकदम सारे सहजात बच्चों से related है, मतलब सारे साथ जाग रहे हैं. And we know it from our experience. That's what happens.
So it gives us a chance to look at our experience carefully, and then we can be more and more mindful of what is happening. उस समय हो सकता है ना हो, बाद में हम रिव्यू कर सकते हैं, अच्छा तो साथ ही हो गया था सब कुछ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने जवाब भी दे दिया, उसको डांट भी दिया किसी को, किस कहाँ विद्या थी, कहाँ संस्कार जागा, कहाँ चित्र में असर पड़ा, कहाँ माइंड में असर पड़ा, कहाँ बॉडी में असर पड़ा, क्या वेदना हुई, सब कुछ एकदम इतनी द्रुत गति से हुआ, इतनी तेजी से हुआ कि वेदना पचे तनहा हो गया, तब मुझे होश आया। ये तो मैंने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। So that's how we begin to see things with more clarity. And as we see things more clarity, the sense of a doer becomes softened. सर खुद ही हो रहा है, मैं करूँ क्या उसका, मैं उसको अपने को बुढ़े जा रहा हूँ. Let me change the conditions, then let me try to work to change the conditions so that avidya is replaced by vidya to the extent possible, then things will go automatically. I don't know. So that is the effort, that is the sadhana I have, or whatever else I find out. Chanda is weak, अच्छा चलो उस पर काम करते हैं. This is that's the whole purpose of this whole explanation. It's a brilliant model for understanding experience. Yeah. Basically understanding our experience. Very right. Thank you, Manteji. If you want to say a few words or anything. Very nice, Dhar साहब, thank you very much. Thank you first of all, आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जब मेरे ख्याल से एक आध महीने पहले हमने ये चैंटिंग शुरू की थी, and we were chanting it with devotion but not really following what was happening. So from then to now, I think we've all benefited in multiple ways. और हम सब जो सीखे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम सब अपनी ग्रैटिट्यूड इस तरीके से डेडिकेट करें कि जिन टीचर ने हमारे लिए इतनी मेहनत की और इतना एफर्ट किया, हमें जो इससे बेनिफिट हो, में ही ऑल्सो पार्टेक इन दैट बेनिफिट. तो ये भाव हम रखते हुए मैं एक्चुअली शेयरिंग ऑफ मेरिट चैंट करना चाह रहा था, बट आई सी वी आर ऑलरेडी वे ऑफ टाइम. सो मे बी हम सब अपने मन में इस तरह के का भाव होल्ड करें फॉर धर साहब, एंड may we of course ourselves benefit from it. So with that we can just close. Bhavatu sabb mangalang rakhantu sabb devata sabb buddhanubhavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabb mangalang rakhantu sabb devata sabb dhammanubhavena sada sothi bhavantu te. Bhavatu sabb mangalang rakhantu sabb devata sabb sanghanubhavena sada sothi bhavantu te. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. So just pay respects to Bhante. Pratham, Vidya, Pratyam. Nice, thank you. Thank you.
Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.